with a bit of warm up. So obviously from the last class, my experience was it has been too technical. Maharaj personally gave me a feedback. So I'll try my best to keep it non-technical today. Okay. So कोई भी framework नहीं. I'll not be following any Vedantic framework. It is not Avastatraya Viveka. It's not Rigdrishya Viveka. It's not Anatma Atma Viveka. So I'll try to give you a glimpse of how I approach the topic. Okay. And I'll try to strictly stick to experiences. If at any point I am deviating from what cannot be experienced, feel free to stop me. I'll repeat and I'll keep on repeating till the point it does not get connected with your experience. So that's the objective I have today. एकदम सफेद सादा straight language में बात करेंगे. Whatever we can experience से बाहर जाएंगे नहीं. ठीक है. The next request I had, please switch on your cameras because see, I am not a lecturer, I am not an academician. So lecture mode में बात करने का आदत मुझे बिल्कुल नहीं है. At max, what I have done throughout my life for the last 15 years, I have given a lot of presentation. That's my work. That's my job. So presentation में होता क्या है? Lecture mode में there is a lecturer who knows the most. So वहाँ पे ना ये monologue चल जाता है. यहाँ पे अगर मुझे monologue देने दोगे आप लोग, so it will naturally become technical. So interact. Anna won't allow you for a monologue. We won't also allow you. Continue. Yeah. I would like that. I would like that. That's the format I am most used to. Because what happens in a corporate boardroom when I am presenting the thing to the equals. They have also been present in the room because they are expecting something. Okay. So this is the third request I had. Discuss. We'll make it a discussion. Make it as discussional as possible, as interaction centered as possible. And finally, see, I'll tell you my experience, how I approach the topic. It will not be based on any framework. So humble request for the next 40, 45 minutes, 50 minutes, whatever, keep your Vedantic knowledge aside. ठीक है. अब वेदांता बाहर रख के प्लीज आइए. ठीक है. जो मैं बोलने वाला हूँ, that might or might not match with Vedanta, but I promise at the end of this class and at the end of all the sessions, I'll connect it back to Vedanta. Okay? Having started it, I will approach to the topic now. Okay? So I was thinking, कहाँ से मैं शुरू करूँ? Because superimposition is a vast topic. Okay? Then I thought this would be a very interesting starting point. आपने कभी सोचा है अद्वैत को अद्वैत क्यों बोलते हैं? अद्वैत translates into not two. ठीक है? What does it basically propose? Is basically proposes oneness, and oneness, trust me, is not exclusive to Advaita. All the religions, all major religions in the world, speaks about the same oneness in almost 80-85% same language. I'll give you some examples. That will be a nice starting point. Okay? Subset, so even more popular than Advaita. What is the most accepted form of non-dualism? Sufism. Maharaj knows that's very close to my heart because I resonate the most with Sufism. So Sufism, man, what they say, so one of the 99 names of Allah is Al-Haq. Haq का मतलब पता है आपको? Haq exactly translates into Sat. The Sat Chit Anand बोलते हैं ना हम लोग, Sat. So as Haq, as Al-Haq, everything is in Allah. Allah is in everything. Sarvabhuteshu Chatmanam, Sarvabhutani Chatmani. The same thing is proposed by esoteric Islam, Sufism. But the name of that doctrine is given as Wadat al-Wujud. Wadat al-Wujud. That means unity of being. Notice the language. It talks about unity, one. Okay? Christianity talks about the same oneness. Okay? Agar Christianity ka oneness aapko, if you want to explore this oneness, but basically non-dual Christianity, you have to Google something called Meister Eckhart, a 12th century German saint whose whole life and whole teaching is based around this oneness only. Okay.
So, but Meister की बात करेंगे तो obviously it will take a whole class. So I have noted down a line from Bible. ठीक है? Bible says, I and the Father are but one. Gospel of John 10.30. ठीक है? Notice the language. So even Bible is non-dual. Bible is monistic. But notice the language. It talks about one. दो कहीं में नहीं आ रहा है. सिखिज्म क्या बोलते हैं? सिख लोग क्या बोलते हैं? एक ओंकार सतनाम. Reality is one. Truth is his name. One. Monism. So everybody talks about oneness. Everybody talks about monism. ये नॉन डुअलिज्म में दो कहां से आया? तो सबसे पहले ये दो को समझेंगे. ये दो को समझना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अप्रोच सुपरइम्पोजिशन. ठीक है? तो आज का क्लास विल बी सेंटर्ड अराउंड दिस अंडरस्टैंडिंग द टू. यही दो को समझेंगे. दो को समझने के बाद दो का रिलेशनशिप एज एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट इंडियन फिलोसफीज वहां तक करने का. सो आई एक्सपेक्ट टू कंप्लीट टिल दैट पॉइंट. ठीक है? आगे बढ़ेंगे. ठीक है? अब तक मतलब कोई देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नथिंग, राइट? ठीक है. सो ये टू. सो द टू that is talked about but by Advaita and whatever Vedant. ये दो आता है एक्सपीरियंस से. If you look at your experience, ever since it started, जब से मतलब since your first experience, you have a dangerous dichotomy when it comes to experience. ये dichotomy है क्या? हम कैसे देखते हैं वर्ल्ड को? There is one I जो मैं हूं, बाकी अदर्स है. ठीक है? एक मैं हूं, बाकी पूरी दुनिया जो मैं नहीं हूं. I and everything else. ठीक है? राइट? एग्रीड? ठीक है? अब I and everything else, ये दोनों में there is a clear अंतर, there is a clear separation. I am not everything else. Everything else which is not I, obviously is not me. Like separation, there is a feeling of separation. मैं किसी एक चीज को मैं समझता हूं और बाकी सब चीज को मैं दुनिया समझता हूं. ठीक है? ये डिकोटॉमी है. ये डिकोटॉमी पूरी जिंदगी हम लेके चलते हैं. एंड बेस्ड ऑन दिस डिकोटॉमी ओनली आई से दिस इज मी, आई एम टॉल, आई एम फेयर. ठीक है? This is my house, this is my friend, this is my daughter, because I am associating something with this I and I am rejecting something जो मैं I के साथ associate नहीं कर रहा हूं. Making sense? अब हाँ बोलेंगे, आगे चलूंगा. ठीक है? One question. What is the meaning of dichotomy? Dichotomy is two. So there are two things separated by something. Is dichotomy. Duality. Duality. ठीक है? Duality. It's a duality. Duality is pre-philosophical. मैं हूं, I interact with somebody else. I interact with Maharaj. I interact with Tapanda. ठीक है? यहां तक मतलब एक्सपीरियंशियली है, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है. आगे चलेंगे. So there are two things separated. एक everything else, एक I. इसको हम नाम देते हैं अभी. ठीक है? नाम का कहां से आया, क्यों आया, ये मैं लास्ट में बोलूंगा. I को हम बोलते हैं अस्मद, एवरीथिंग एल्स को बोलेंगे युष्मद. दिस एंड दैट. क्यों? क्योंकि I का मीनिंग अभी चेंज होगा. दिस इज द क्लास ऑन एक्सपीरियंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ I. तो I का मीनिंग अभी चेंज होता जाएगा, तो I को यहाँ पे रख नहीं पाएंगे. अस्मद, युष्मद. ठीक है? दिस एंड दैट. ठीक है? तो अभी हम देखेंगे. सो ये दो जो चीज है, आई एम सेइंग अस्मद व्हिच इज I वर्सेस एवरीथिंग एल्स, it is separate. There is a feeling of separation. That feeling of separation is also real. अब दो चीजें हैं, एक तो I, दूसरा everything else. इन दोनों में मैं I किसको बोलूंगा, everything else किसको बोलूंगा? What qualifies, what makes something qualified to be called as I? अब आंख बंद करके सोचो. Whatever I am saying is absolutely experiential. उसके बाहर कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं. आंख बंद करके सोचो. You feel like
you are located here, somewhere here, towards the side of I, जिसको हमने अभी I बोला, right? You are located there. अब when you say I am located here, उसका मतलब क्या है? Your perspective arises from the center, whatever center it is, that center is located towards I. ठीक है? उस सेंटर से मैं क्या करता हूं? मैं फील करता हूं, मैं सेंस करता हूं, मैं लोगों से ट्रांजैक्ट करता हूं, मैं दोस्त बनाता हूं, मैं घर पे रहता हूं, ठीक है? और फ्रॉम दैट सेंटर, इसको फिलोसॉफिकली बोलते हैं सेंटर ऑफ सेंशियंस, बेसिकली द पॉइंट फ्रॉम विच यू फील, यू इंटरैक्ट, यू ट्रांजैक्ट। वो जिस साइड में है उसको मैं आई बोलता हूँ, और जिस साइड में नहीं है, ऑपोजिट साइड को मैं एवरीथिंग एल्स बोलता हूँ, अस्मद, उस्मद, राइट? ठीक है, तो आई हो गया। अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे एवरीथिंग एल्स को। किसको मैं एवरीथिंग एल्स बोलता हूँ? एवरीथिंग दैट हैपेंस अराउंड दिस सेंटर, ठीक है? जिसको भी मैं जगत बोलता हूँ, युष्मत बोलता हूँ, ठीक है, एवरीथिंग एल्स बोलता हूँ। इफ यू सी, फिर से आप बंद करके सोचिए, इट इज अ फीलिंग ऑफ एनकाउंटर्डनेस। एनकाउंटर्डनेस का मतलब अंदर मैं बताता हूँ। एनकाउंटर्डनेस का मतलब है समथिंग दैट अराइव्स एंड डिपार्ट्स। अभी 5 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले आप और कहीं थे, अभी लैपटॉप के सामने बैठे हो। लैपटॉप का स्क्रीन है आपकी आंखों के सामने, आप बंद कर दो, चला जाएगा, ठीक है? whatever you experience, कल आप और कहीं पे थे, आज कहीं पे हो। सुबह कुछ और फील कर रहे थे, अभी कुछ और फील कर रहे हो। अब जिस चेयर में बैठे हुए हो वो चेयर 3 साल पुरानी है, आगे जाके वो चेयर नहीं रहेगा। जिस घर पे हो 10 साल बाद शायद वो घर ना रहे, जो दोस्त है वो नहीं रहेंगे, ठीक है? आज से 5 साल पहले जिनको आप दोस्त बोलते थे, आज शायद वो नहीं है। So everything that I say, everything else has a sense of encounteredness. It arrives and departs. ठीक है? everything, ठीक है? agreed तो आगे बढ़ेंगे। जस्ट ट्रिविया हियर, आपको पता है इस अपने स्पाइन को क्या बोलते हैं? स्पाइन को बोलते हैं मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब होता है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। in yoga philosophy also, this came from yoga philosophy. Spine is actually accepted as the center of the world. So you are the center of the world around which jagat happens. And jagat का मतलब वही है, it has a sense of encounteredness. Jayate gacchate tishtete, comes into being, it goes off existence, in between for some time it stays. ठीक है? Okay, since you want an interactive thing, I just want to highlight, you said there is a center of sentience, Asmad, the feeling, and around it there is Yuṣmad, the you, the objective environment around. And all those objective environments Yuṣmad has, you said this last word, encounteredness, sense of encounteredness, encounteredness with respect to this Asmad, with respect to me, मेरे दृष्टिकोण से there is a sense of encountership or मैं encounteredness. दृष्टिकोण में आया नहीं अभी तक, लेकिन that was the next point I wanted to cover. But yeah, obviously you know So दृष्टिकोण. this is, okay. So for me to understand, I just needed to repeat. You allowed me. Thank you. सेपरेट, सो अभी तक मैंने बात किया सेपरेटनेस की, ठीक है? सेपरेटनेस के बाद मैंने बात किया सब्जेक्टिवनेस की। आई एम द सेंटर, अराउंड मी एवरीथिंग इज हैपनिंग, आई कैन पॉइंट एवरीथिंग एल्स एंड आई सी एवरीथिंग इज लिमिटेड बाय टाइम, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अभी my next point was this, what you said, between Asmad and Yuṣmad, I and everything else, which one is more relatively more permanent? अब बचपन में आप ही थे, ठीक है? आपने तो अर्नव, आपने एक स्टेप ज्यादा बोल दिया था, वहां पे मैं आने वाला था। बचपन में भी आप ही थे, कल भी आप ही रहोगे, ठीक है? बट द वर्ल्ड विल चेंज अराउंड यू।
So this feeling of encounteredness that I established, okay, that is respective to I. Which one is the permanent, more permanent counterpart between the two? I. Everything else is the changing counterpart. ठीक है? अब इसको थोड़ा बेसिकली एक्सपीरियंस थोड़ा इसको पक्का करेंगे और कुछ नहीं, कॉन्क्रेटाइज करेंगे. ऑल सीन्स, ऑल साउंड्स दैट अपीयर, ठीक है, ये अस्मद में आता है, युस्मत में आता है, युस्मत में आता है, ठीक है, एवरीथिंग एल्स में आता है, ठीक है. ऑल द सेंसेशंस, व्हाटएवर आई एम फीलिंग, कोल्ड, हॉट, कहाँ आता है? आई कैन पॉइंट, इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो आता है उस तरफ, युस्मत में. ऑल द थॉट्स, अब देखो कहाँ थॉट्स क्या होगा, अस्मद होगा, उस्मत होगा, बताओ. एनीबॉडी इंटरेक्ट? युष्मत चला जाता है इसीलिए युष्मत. राइट, युस्मत, राइट, ओके. उसके बाद इमोशंस, सुबह मैं हैप्पी था, अभी मैं सैड हूँ, युस्मत, ठीक है. Situations arise, situations pass. I was hoping Sanskriti to join. Sanskriti did not join. Sanskriti है संस्कृति भी है, yeah, Sanskriti तुम्हारा भी है. what is I the am it. practical implication? Hi Sanskriti. What is the practical implication? यही पे आता है practical implication. ठीक है, आज सुबह हम हैप्पी थे, अभी आप सैड हो, शाम को जाके हैप्पी हो जाओगे. Situations, friends, people in your life, they are on the side of Yusmat. They come, they go. You stand at the center. Whatever is bothering you, whatever is affecting you today, will not remain as it is. You will remain standing there at the center. इससे बड़ा practical implication क्या हो सकती है? ठीक है, okay. So moving ahead. So I and everything else may difference. These two are separate. That's the first point we established. I has a subjectiveness because that's the center of your perspective. Everything is whatever you see, whatever you hear, whatever you feel, whatever you sense, those are objectives. One is constant, another is transient. The last point, मैं था, जो मैंने बोला, practical implication. Situations change, sensations change, everything change. So they are many. I am one. ठीक है, अभी तक एक्सपीरियंस, वी हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू स्टिक टू एक्सपीरियंस. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज करेंगे, दिस बकेटिंग एक्सरसाइज विल कंटिन्यू. ठीक है, दिस स्लाइड के एंड पे आई प्रॉमिस अ मैजिक विल हैपन. ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से करिए. मैं एक एक करके ऑब्जेक्ट बोलूंगा, आपको अस्मद या उस्मत में करना है बकेटिफाई. सबसे पहले सन, obviously, Yuṣmad. Moon, Yuṣmad. Earth, Yuṣmad. Universe, Yuṣmad. ठीक है, अभी थोड़ा माइक्रो लेवल पे आता है. गुरुग्राम, Yuṣmad. विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज, Yuṣmad. Everything else, Yuṣmad, basically everything else. ठीक है, then this class, Yuṣmad. Laptop, mobile, whatever you are sitting, standing in front of, Yuṣmad. ठीक है, your hand, Yuṣmad. Yuṣmad, right? Yuṣmad. Your legs, Yuṣmad. Your body, is it I or everything else? कौन सी साइड में आएगा ये? It gets confusing over here. अब बताओ. हाँ, it gets confusing over here. हाँ, तो आप आंसर दो. What do you think? It is I. Depends on how I look at it. अब बताओ कैसे आप look at करते हो? Sometimes बॉडी युष्मत, sometimes तो अस्मत. बॉडी तो व्हीकल हुआ ना, आई का तो युष्मत. Yuṣmad. Yep. If my hand is Yuṣmad, if my leg is Yuṣmad, all my body parts ऐसे मैं अगर Yuṣmad कर दूंगा, तो बॉडी किधर गया? Yuṣmad नहीं जाएगा. Body has a sense of encounteredness. Every day you wake up, you discover there is a body. Every day you sleep, if you are dreaming, you have a different body, not this one.
When you go off to deep sleep, this also disappears. Whoever has experienced a full anesthesia, they would know body appears and disappears. युष्मत, बॉडी चला गया, युष्मत ठीक है, आपने छोड़ दिया, युष्मत के साइड में दे दिया आपने एवरीथिंग एल्स. उसके बाद ऑल द सेंसेशंस ऑन योर बॉडी, युष्मत बॉडी है. और थॉट्स किधर जाएगा? चेंज होते रहता है युष्मत. युष्मत, ठीक है. Everybody agrees, right? Thoughts are on the side of Yuṣmad. Sir, Yes. you agree? Okay. Yes, 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 sir, yes. yes, sir. Everybody agrees, I guess. Okay. Intellect, memory, सब Yuṣmad. ठीक है. आपने सब दे दिया. फिर भी was standing at the center. सब आपने दे दिया everything else को, जगत को, Yuṣmad को. अस्मद में फिर भी अभी खड़े हो आप. अभी at this point the magic that I promised will happen. अब अपना आंख बंद कीजिए, ठीक है. I'll ask you to do an exercise. You have to draw a line, imaginary line through your belly. Basically, you have to divide your body into two parts, two sections, upper body and lower body. इसमें अगर मैं पूछूं, where are you located? आप सोचोगे मैं किधर located हूं? Where is this I in inverted quotes located? अपर बॉडी या लोअर बॉडी? बताओ आप आंसर. अपर बॉडी, अपर बॉडी Upper body? नियर हार्ट, दिल के पास. ठीक है. upper body. मेरा between, I mean upper ऊपर. upper body, everybody head upper के body. हेड के अपर वहां तक आएंगे. अब फिर से जो अपर बॉडी को फिर से दो पार्ट में, दो हिस्सों में बांट दो आप. बांट दिया. अभी मुझे बताओ, इट्स इन द लोअर हाफ और इन द अपर हाफ? ये डिवीजन कहाँ से कहाँ तक है? ये चेस्ट से. अब जहां पे अपर बॉडी आपने बोला ना, अपर बॉडी को मैंने हाँ, दो तो हिस्सों में चेस्ट बांट के दिया. ऊपर वाला हुआ अपर ना? हाफ. हाँ सॉरी, चेस्ट के ऊपर वाला हुआ. चेस्ट के ऊपर वाला, चेस्ट के नीचे वाला. हाँ, राइट. upper body is, I guess, Asmad. अपर बॉडी लॉक So करो. Avirup ji, what you are asking राजेश, is where are you located? Where are you located? हाँ, I'm feeling that I'm still located at heart side, दिल के Heart पास. side, heart side. Lower, राजेश जी, lower, now lower. now lower. Division में lower. ठीक है. सारे लोग, my everybody needs to answer. no my I have a different feeling. If I generally, when I'm thinking, it is always upper. Smiling for some reason. Yeah, You so only understood where I am going. Is it? what? Ramphal is smiling for some reason. Oh, smiling. I was just thinking Rajesh ji is saying I'm in lower body, but he's speaking from upper body. No. See, Yeah. Ramphal, what Avirup ji is No. telling, the Yes, body yes. is the from top to head. Yes. First categorized, is it lower half or upper half? Uh, There we are in the upper half. Now upper half में भी वो ऊर्ध्व है ना नीचे में? That's what he's हाँ. asking. कहाँ हो? हर जगह हो. पैर कटेगा कोई तो वहां भी दर्द होगा. चोटी अभिनव जी, कहीं भी क्वेश्चन क्या जाएगी. था? फिर से रिपीट करना. Question कौन? ये है. Question, Sanskrit, you are asking me, right? Yes. Question ये है, पहले अपने बॉडी को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है. I drew an imaginary line through my belly and I have asked all of you to do that individually. Then I asked, if I ask you to locate yourself in the body, where do you locate yourself to be? Upper body में या lower body में? That was the first question. आप सब ने बोला अपर बॉडी में हूं मैं.
एक क्वेश्चन था कि हम बॉडी में लोकेट ही क्यों कर रहे हैं खुद को? जब हम मर जाते हैं तभी तो हम आप मूव वेदांत करते रहते हैं। वेदांत साइड में रखो, अभी अभी के लिए कुछ आप सबने आंसर दिया पहले ही शॉर्ट में, एकदम स्पॉन्टेनियस आंसर, एवरीबॉडी सेड अपर बॉडी। मुझे तो लगता है कि मूव होता रहता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड अच्छा, रिक्वायरमेंट्स। मूव होता रहता है, ठीक है, दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, मूव होता रहता है, बट व्हाटएवर इज मूविंग, यू आर बीइंग एबल टू लोकेट इट। वो फिर थॉट, सेंसेशंस, इमोशंस के जरिए ही लोकेट होता है, ठीक है, बट लोकेट होता है ना। एक्सपीरियंस के जरिए लोकेट होता है, राइट? ठीक है, 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 ठीक है। द पॉइंट वाज नॉट टू फाइंड आउट वेयर आर यू लोकेटेड, पॉइंट वाज टू शो यू even I can be located inside the body. आपने लोकेट, सबने लोकेट किया, सबने at the first go everybody said I am located at the upper body. अभी मुझे बताओ, ठीक है, the I that you have located and the I which located whatever has been located, उसमें से अस्मद कौन है, युस्मद कौन है? Put some thought into it. किया ना हम ऑब्जेक्टिफाई, लोकेट किया ना आई को, किए, राइट? एवरीबॉडी डिड इट एट द फर्स्ट गो। खुद को भी आप एवरीथिंग एल्स में दे रहे हो क्या? सब दे दिया ऑलरेडी जगत को। सर अब ऐसा लग रहा है कि अब उस्मत जो है वो आई जो है उस्मत की तरफ जाता लग रहा है। This is where the magic happens. At this point, you keep on thinking. ठीक है? You're getting what I'm trying to. I'll be able to appreciate what I'm trying to say. आपने सब किया, स्पॉन्टेनियस लेवल पे ही किया, बट सब किया, उसके बाद सोचने लग गए, अपना वेदांत आ गया बीच में ना। यू हैव बीन लाइक लर्निंग वेदांत फॉर सो लॉन्ग नाउ, यू हैव बीन अटेंडिंग दीस क्लासेस। आपको उसके बाद स्पॉन्टेनियसली करने के बाद आपको लगने लगा, अच्छा ये पूछ रहा है, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो ट्रिक होगा इसका। तब जाके रामपाल वाज स्माइलिंग फॉर दिस रीजन ओनली, आई वुड प्रिज्यूम। ठीक है, उसके बाद हम क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर जाके आप इसको कॉम्प्लिकेट करना शुरू किए। बट उससे पहले तक अपर बॉडी में आपने, हम सब ने लोकेट किया इसको। सो लोकेट अगर किया तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी ट्रू, अदरवाइज हाउ डू यू बी एबल टू लोकेट इट? जो लोकेटेड हुआ वर्सेस जिसने लोकेट किया, उन दोनों में किसको अस्मद बोलोगे, किसको युस्मद बोलोगे? इज माय क्वेश्चन। जो लोकेट किया और जिसने लोकेट किया, दोनों उस्मत। जो लोकेट किया, जिसने लोकेट किया, दोनों युस्मद है। यस। वुड बी एन आंसर। मैं जो रिलेशनशिप्स बताऊंगा, दैट्स वन ऑफ द आंसर्स, यस। इसके बाद टेक अप द रिलेशनशिप्स एज एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट फिलोसफीज, इन इंडिक फिलोसफीज बेसिकली। बाहर नहीं जाएंगे, इस्लाम क्वेश्चन आपने कभी दूसरे क्लास में करेंगे। यस और नो? So the question that you're asking, can I answer? See, if you ask me where am I seated or where am I located, I was feeling somewhere near the this area, the face area, because you said here. no, Here, whatever face may be, yeah, face. somewhere in the face, because when I am thinking, when I am feeling me, I don't see mere feet can anguthe mein I am feeling myself there. So, and when I'm thinking, when I'm having that I-ness, I do not see it from the heart. So first question का answer कि यहाँ पे, the second question, now the seat of location is also Yuṣmad because something is identifying it. Now, where is that person who is identifying this seat of I-ness, whether it's heart or this head area? Where is that located? That, so to say, doesn't have a location. See, Arnab, so you're getting my question wrong. I'm not asking where is it located. I'm asking, what is the seat of location? 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 What is the seat
wherever it may be. No, you are not asking where it is located. Am I asking if you have been able to objectify it? So that there is should be Yuṣmad. something which is objectifying it. Yes, which is the Asmad. ठीक है. अब ये दोनों में, so there are two entities now. I that I have objectified here. In your case here, in Sanskriti's case, it is moving. ठीक है. So somebody there is are two entities. identifying it. एक है जिसको located हुआ जो, दूसरा है जो जिसने locate किया. In दोनों में, which one is I and which one is everything else? Is my question. Which I answered. The locator is the Asmad, and for my case, it is here. It is the Yuṣmad again. Why do you say so? Because somebody is objectifying na ki me, that me feeling is located somewhere. That's one answer. But what could be the other answer? Encounteredness. It has an encounteredness. Yes, it has your sense of I. Your sense of I only arises once you wake up. It has that sense of encounteredness also. It arrives and departs. Anesthesia में दे देंगे, full anesthesia में दे देंगे, you will not be able to locate this I that you have located. Yes. ठीक, right? So ये all भी concretize हो गया. That goes on the Yuṣmad side. किसी को कोई doubt है? Anybody wants to refute me at this point? As Sanskriti ji was telling, it was kind of a refutation, which I was also thinking, but I couldn't. So what she said was, this sense of I is Asmad as well as Yuṣmad, is what I felt what she was telling. Because that's one of the answers. That's one of the accepted answers. That's one of the accepted answers. I'll come to that. ठीक है, that could be one of the answers. दोनों को बोला था युष्मत. दोनों को युष्मत बोला था. अच्छा, दोनों को युष्मत भी also is an accepted answer. You know, one of the philosophies I'm going to speak about. चले आगे चले. यहाँ तक कुछ है नहीं ना. Experience के बाहर कुछ नहीं बोला मैं. Right? ठीक है. Just one small टिप्पणी from my side. देखो, आप जिसको I बोलते हो, कितना लीन है. मतलब even the feeling of I, that does not stick to I. So अब किस चीज को लेके you get bothered in life? Is there any concrete reason to be affected by anything? Nothing will stick. Even that I that you are calling, that you just located. That's the sentence. I don't know how many of you are in software. There is something called a primary key. Primary key के साथ सब कुछ link back करते हो आप ना. The I that you located is ego. ठीक है? That's a primary key जिसके basis पे everything is integrated. Based on that I, you associate a story, you associate a character. मतलब वो स्टोरी के साथ आप कैरेक्टर अटैच करते हो, स्टोरी के कैरेक्टर के साथ आप फीलिंग्स अटैच करते हो, सेंसेशन अटैच करते हो, कुछ मुझे बुरा लग गया, कुछ मुझे उस कैरेक्टर के अराउंड आप दोस्त बनाते हो, एक दुनिया क्रिएट करते हो. दिस इज द ग्रैंड एरर. इसी को बोलते मम अहम इदम मम इदम. आई एम दिस इज माइन. वेदांतिक लैंग्वेज. ठीक है. Again, see, Asmad, Yuṣmad are the first two words of Shankaracharya's Adhyasavasyam. It starts like Asmad, Yuṣmad, Pratyay, Gocharaha, Vishay, Vishayinoha. I have to read it. Okay? So I'm just trying to explain first two words of Adhyasavasyam. यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. So I said I'll link back everything to Vedanta later on. And Mama Idam Mahamidam also comes in the middle of Adhyas Bhashya. ठीक है, आगे बढ़े. Sir, Avir sir, the problem is this identification. When this I continuously means without any break. कोई seconds का break भी नहीं महसूस होता है.
It's continuously identifying with everything. That maybe first is body, then everything else. That identification, how to understand it? आते इसको हैं कैसे पकड़ें? उसको लेके डिस्कस करेंगे. अभी आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. ठीक है, अभी अस्मद उस्मद क्लियर हो गया ना? अस्मद उस्मद लेके किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं. ठीक है, अभी ये अस्मद एंड युस्मद, ठीक है, जो भी है, इट हैज अ प्रॉब्लम. आई एम दिस इज माइंड. सो अभी हम समझेंगे हाउ दिस आई एंड एवरीथिंग एल्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट फिलोसफीज बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स थ्रू द एजेस. इनमें रिलेशनशिप क्या है एंड व्हाट इज द रीजन गिवन फॉर व्हाट राजेश सर सेड. ठीक है, इसके लिए अपने को थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा वापस. ठीक है, इफ देयर इज एनी हिस्ट्री स्टूडेंट इन द क्लास, प्लीज आप मुझे माफ करो, बिकॉज आई विल बी ओवर सिंप्लीफाइंग थिंग्स हियर. द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री और गिव अ परफेक्ट टाइमलाइन. हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू get pointers to something really really powerful, something really really meaningful, the reality of life. ठीक है, सो एकदम शुरू करेंगे टाइमलाइन 4000 साल पहले से. आज से 4000 साल पहले क्या हुआ? वैदिक सिविलाइजेशन, agrarian societies, agrarian settlements started happening around this area where we are sitting now. हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, गैंजेटिक प्लेन्स. ठीक है, दोआब एरिया जिसको बोलते हैं. और वहां पे people started collating something called Vedas. ठीक है, Vedas का मतलब होता है नॉलेज. अब इसको स्टोरी जैसा सुन लो, बिकॉज आई नीड टू डू दिस, बिकॉज आई नीड टू पुट इट इनटू अ पर्सपेक्टिव. इस इतिहास में नहीं बताऊंगा तो ये पर्सपेक्टिव में आएगा नहीं. ठीक है, ये 4000 साल पहले की बात है. Vedas, when Vedas were started being collated, ठीक है, the first sections that were collated were Samhita, जहां पे सारे मंत्रास है, एंड ब्राह्मण. ब्राह्मण में क्या है? ब्राह्मण में सारे द प्रोसेसेस ऑफ वर्शिप्स, प्रोसेसेस ऑफ यज्ञ, सैक्रिफाइसेस आर देयर. 500 साल, 3500 साल, लगभग 3500 साल पहले आज से उपनिषद्स were being slowly coming into play. कैसे? उपनिषद्स आर द डायरेक्ट अकाउंट्स ऑफ डायरेक्ट रियलाइजेशंस ऑफ द ऋषिस, सीयर्स. वो जो देखते थे, जैसे वो लोग रियलाइज करते थे, they used to note it down. अब रियलाइजेशन है, ठीक है, ऑब्वियसली बाय नेचर दे आर वेरी अनस्ट्रक्चर्ड. ठीक है, आज से 3000 साल पहले, another 500 years, the first systematic philosophy of humankind shaped up. It is called Sankhya. ठीक है, 3000 साल पहले by sage called Kapila. And Kapila has been rightly named by the first philosopher of humankind by Swami Vivekananda. ठीक है, सांख्य. अब ये अस्मद एंड उस्मद को सांख्य कैसे डिस्क्राइब किया उसको समझते हैं. Based on Upanishads, सांख्य से the thing that you are calling at Asmad, मतलब आज जिसको हमने अस्मद समझा, that is called Purusha, and everything else is called Prakriti. ठीक है, both are eternal realities, like two parallel streams. When they two interact, ठीक है, when they two are in union, then sentience happens. ठीक है, sentience का मतलब क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले I explained it. ठीक है, so इसीलिए this is the esoteric meaning of Shivalinga, Ardhanarishwar. ठीक है, where the male counterpart is Purusha, which is the Asmad that we found out, and everything else is Prakriti. They are in union. That's why this sentience, Jiva, this sentient center happens, comes into being. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है राजेश जी? टू आंसर यू, इसमें प्रॉब्लम ये है, confusion between Purusha and Prakriti. We are not able to identify Purusha and Prakriti separately because they are always in union. ठीक है, अब Samkhya से around that time, maybe a few centuries later, yoga also came into being, yoga philosophy. Samkhya and yoga, these two philosophies, these two are not separate philosophies. Samkhya is the theory part of it, like pure science, and yoga is the engineering part of it, applied science. So yoga में whatever
you do, whatever. The objective of yoga is to separate out these two at experience level. यूनियन में है पुरुष और प्रकृति, आप पुरुष को अलग से देखने की कोशिश करोगे थ्रू योगा. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा. ठीक है, तो ये हो गया. तो 500 साल और आगे चलेंगे. ठीक है, 3000 साल पहले थे हम लोग, 2500 साल. 2500 years ago, a miraculous gentleman, ठीक है, walked the arts, the prince of Kapilavastu. ठीक है, he said, उपनिषद वो जो भी है, जो भी आपने सांख्या जो भी बोला, ठीक है, कुछ सही नहीं है. I am again theorize it completely based on experience. Buddha did not say anything which you cannot experience directly. That way, and this is probably one of the reasons why his appeal was like, his popularity was, in some accounts, when Buddha used to walk, a few thousands people or maybe lakhs people used to follow him. तब आपको पता है, मतलब पूरे दुनिया का पॉपुलेशन था 50 मिलियन. मतलब some percentage of the whole population is walking along with you. This was the magic of this gentleman. उन्होंने बोला कि देखो भाई, कोई पुरुषा कोई प्रकृति इटर्नल कुछ भी नहीं है. They arise in an interdependent way. He talked about interdependent origination. Pratikta samutpadan. When one arises, the other also arises. Without the one, the other cannot arise. Or without the one, the other cannot stay. He gave an example. Two hay bales stacked like this. If one is removed, the other will fall. Okay? So this is what Sanskrit was saying. कि दोनों ही नहीं है. You are not the first one. Buddha said it 2500 years ago. दोनों में कुछ नहीं है. अब दोनों नहीं रहेंगे तो वहां पे क्या रहेगा? शुद्ध में कुछ नहीं. This is the core proposition of Buddhist philosophy. अब इसमें, if I take this doctrine to be real, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. If nothing is eternal, I'll not be able to accept the existence of God. कुछ तो है ही नहीं. Nothing is eternal. ना प्रकृति इटर्नल है, ना पुरुष इटर्नल है, ना अस्मद इटर्नल है, ना उस्मद इटर्नल है. ठीक है. This is why for the next 1000 years the philosophy developed through dialectics. Post Buddhism, whatever philosophy came into being for the next 1000 years before Shankara, like your Naya, Vaisheshika, then your Mimamsa, all are philosophies deeply rooted into logic. Their aim was to argue God out. They never focused on experience. It started with experience in yoga. Buddha also talked about experience, but Buddha negated the continuous nature of Prakriti or Purusha. So इसीलिए the Hindu, the Sanatanis, they wanted to get into the argument. And for the sake of argument, Buddhist philosophy also developed into a complete whole philosophical framework called Shuddhavada. ठीक है, हो गया. अभी in these 1000 years, two other fantastic things happened in the other part of the world. 2000 years ago, the Son of God came into existence, Jesus. And 500 years later, 1500 years ago, Prophet also started Islam. These two gentlemen talked about a God which is formless but with attributes. Chicken. Now, in this setting was developed Advaita philosophy. Obviously, Advaita philosophy was always there. It was nothing new, but it is brought to the foreground by Acharya Shankar. Around 12th century.
ठीक है, ये जो मैं बुद्धा का 1000 साल बाद ही मैं बात कर रहा हूँ, 1800 साल 900 साल के बाद. What Shankara said, basically the philosophy he took from other philosophy, he took from Vedas, and to a great extent it was formalized and structured by his Dada Guru Gaudapada. He said, out of Asmad and Yuṣmad, Asmad is the only reality. Yuṣmad is an appearance in Asmad. World is an appearance in consciousness. How this appearance happens? This mechanism is called superimposition. At least he termed this as superimposition adhyas. What is the error there? Superimposition. अब यही पे superimposition शुरू होता है and आज का क्लास खत्म होता है. We'll take it from this point onward. If you have any question, because I wanted to give also Maharaj wanted to give Maharaj 10 minutes because he might have some special comments, he might have some thoughts to add. Okay. So this is what is superimposition. एक है, Shankara said, only Asmat is there, only consciousness is there. Jagat, whatever we said, encounteredness and whatever, okay, that appears on Asmat through superimposition. ठीक है, next class will start. इसको हम और भी समझेंगे, through an exercise समझेंगे. ठीक है, हम I जो बोले I am, I में से दोनों को अलग करेंगे, I and amness को. ठीक है, तो और भी अपने को ये पक्का हो जाएगा what I am trying to say. वहां से हम superimposition को आगे लेके चलेंगे in the next class. That will be the beginning of the next class. ये मैंने थोड़ा hook दे दिया. Maharaj, over to you. 10 next. I'm left with 10 minutes.